Now, from in this session, I want to just discuss something that is cost function, loss function, and another thing is error surface. Now, what is cost function, what is loss function, and what is actually error function? Sorry, error surface. So this is the actually like theory. Cost function C maps a parameter vector theta to a scalar C of theta, which we actually would like to minimize. That is the cost function. Okay, and what is the loss function? Like, what is the cost function? Firstly, let me just start with that. So cost function in the sense it just say cost function C maps the parameter vector theta. Vector theta in the sense that's nothing but a, here you can just consider like here the theta means actually that's nothing but a weight vector. Theta means it's nothing but a weight vector. So cost function C maps a parameter vector theta. That means it maps W. Okay, to a scalar C of theta, which we like to like minimize. So that's the overall actually cost कि like मुझे पूरा अपना algorithm develop करने के लिए how many actually weights are required and weight कर like weight जितने भी हम लोग use करते हैं और minimize करने का मतलब like मुझे error rate जितना हो सके उतना minimize करना है. Just manage this W and minimize the actually rate error rate you have to just minimize. That is the cost function. And what is the formula for the cost function? 1 upon n sigma equals to 1 to n, and here we have L. L in the sense that's the loss function, f of theta and zi. Now, what is that f of theta and what is the zi? So now you can simply say that like f of theta of x is nothing but a prediction of phi. So according to us, अगर हम लोग perceptron algorithm की बात करें, then हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखा था ti minus yi. Okay, ti minus yi whole square. Okay, so हम लोगों ने actually square loss function use किया था perceptron algorithm में. So what is the ti and what is that yi? So ti it's nothing but a predicted value. Ti is nothing but a predicted value. And what about the yi? Yi is actually actual value. Okay, yi is nothing but an actual value. So otherwise you can say that okay now मैंने actually labels उल्टे लिखे हुए like ti is an actual value and y is a predicted value. That's up to you. आप आगे पीछे कर सकते हो because it's a square. Okay, a minus b whole square is equals to b minus a whole square. So it doesn't matter क्या changes are. But now the thing is that is actually a function. So here I just use a square function. I just use a square function. You can just use either of the function. And here only two variables are there, that is ti and actually yi. So I can just write down like this. L of, what is that L? That's actually a loss function. And I can just write down ti comma yi. That's my loss function. Okay, so here we have a loss function. Here we have a loss function. So now what is my requirement? I want to just minimize this loss. So the C of theta, what is that C of theta? That's actually our overall cost in the sense that you can say that it's an overall accuracy. Okay, so what is my requirement? हम लोग generally loss function calculate करेंगे हर एक instance पे. तो हर एक instance में मैं loss calculate करता जाऊँ, just sum up all this thing and उसका average ले लीजिए. Okay, जितने भी आपको loss मिल रहे हैं उन सबका sum up करें. So sigma equals to 1 to n, उन सबका addition करें and उसका average ले लीजिए. That is nothing but typical C of theta. Okay, that is nothing but in typical C of theta. Now, in this formula where L is nothing but a loss function, in my case, in my perceptron algorithm, I just use a square loss function. You can use either of the loss function, that's your choice. Now, Z of xi, sorry, Z of xy and f theta of x is nothing but in prediction of y indexed by parameters theta. What is that parameter of theta? That's nothing but in weight vector. Okay, so like this is the actual value Z of x comma y. X is nothing but an input. X is nothing but a feature value, y is nothing but an actual value, y is nothing but an actual value. In the sense, अगर आप एक data set consider करें, let us say iris data set. In iris data set, there are 4 columns. So the value of x will be start with x of 1 to x of 4. Means like 4 features are there, and y is nothing but a labeled. That's a class column value. So z of xy, that means it's an input. X is nothing but a feature, and y is nothing but a labeled value, actual value. What about that f theta of x? So now अगर मैं perceptron algorithm की बात करूँ तो मुझे उसमें actually weight input करना होता है, so that weight is nothing but a theta over here. तो हमने वो add किया and we will just predict f of theta of x, that is nothing but a ti as per the perceptron algorithm. So that's that. So that is nothing but in cost function actually definition. So what is the cost function? Cost function is nothing but an overall loss and the accuracy. Okay, average loss in the accuracy. That is nothing but a loss. Okay, cost function. Is it done, guys? So let me just take an example. So consider a task. You have to predict a salary of a person
Okay, in a room, you have to predict a salary of the person in a room and say that you have already 20 salaries are given. That means using the 20 salaries, what you have to do, you have to just train a model using this 10 to 20 salaries. You have to just train a model, and whenever the query point comes in, you have to just predict the outcome. So now here in this example, we just use a linear regression model, linear regression algorithm. We just use to just minimize the square difference between the actual and the predicted salary. मतलब like कोई मेरे पास query point है, I just say oh salary is 20,000 as per the feature value, but the actual salary is actually 22,000. So that's the loss function. So what we can do, 20,000 is a predicted, 22,000 is nothing but an actual value. So loss function use करके हम उसको generally minimize करने की try करते हैं. So what about the and what about this one? So L is nothing but a square difference. So जैसे हम लोगों ने डिस्कस यहाँ ये सेम एग्जांपल की जगह हम लोगों ने यहाँ पे परसेप्ट्रॉन के रेफरेंस में कॉस्ट फंक्शन समझने की ट्राई की थी. So here also the square difference is nothing but a loss function. What about the theta? That's actually linear algorithm, linear regression weights or parameters. So in perceptron also what we did actually हम लोगों ने भी theta input किया था. How many thetas are there? Thetas in the sense that's the weight vector. तो कितने weight vector है? So अगर मैं like iris data set की बात करूँ, so in iris data set I have 4 features. So we have actually 4 weights, W1 to W4. And guys, if there is a bias, then there is one more actually weight we have to tune. Okay, that's actually a theta. But for the simplicity, I will not use the theta word because यहाँ पे theta नहीं पे और जगह use किया है. Okay, slide में हम लोगों ने weight vector को theta बोला हुआ है. So we will not use theta over here. So in the place of theta, I will just say that's a bias value. So that's W5. Okay, I will just say, oh, that's a W5. So if you have actually n values, then n values in the sense n features, I mean to say. Okay, मान लो मेरे पास 5 feature है, then how many weight values we required? We required 6 weights. Okay, we required 6 weights. So that's that. So now question is, what is the theta for MLP? What is the theta for the MLP? I hope that's clear. What is the cost function? I hope that is clear. What is the cost function? And what about the loss function? So here we just consider for the perceptron, we just consider a square loss, we just consider as a loss function. Guys, you can just use either of those loss functions. That's your choice. So these are the loss functions which we will discuss actually. Absolute difference, square loss and Huber loss. Okay, ये सब चीजें हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस की थी. So these are the loss function, like absolute difference in the sense like yi minus xi. Not the xi, yi minus ti, that's the absolute loss, and just use the mode value. मतलब negative consider मत करें. Okay, what is the actual value? What is the predicted value? Just make a difference of that. That's actually absolute difference. What about square? Yi minus ti whole square. Otherwise, ti minus yi whole square. That's the square loss. What about the Huber loss? So we have a threshold. Threshold in the sense, अगर इस threshold के down में आए, then just go with the absolute loss. And अगर इस threshold से ऊपर अगर आपको कुछ parameter मिलता है या predicted value मिलता है, just use the square loss. So that's nothing but a Huber loss. Huber loss is nothing but a combination of absolute and square. Okay, so that's the thing. Like so these are the things that different actually loss functions. We can use either of the loss functions. But now the thing is, what is the theta for MLP? Yes, anyone? What is the theta for MLP? Theta in the sense weight vector. Okay, theta in the sense weight vector. So let me take simple example. Consider this is my input. Input को हम लोग को पता है कि हम लोग उसको square या rectangle से represent करते हैं. And I have two hidden layers actually. So in the first hidden layer, I have 3 neurons. In a second hidden layer, I have 2 neurons. In a first hidden layer, I have 3 neurons. In a second hidden layer, I have 2 neurons. And this is the outcome layer. Otherwise, you can say that that's the final neuron actually I have. And here I have actually 2 input actually. Okay, मेरे पास यहाँ पे 2 input है. Let I just say that I draw 2 rectangles actually. Okay, fine. So I have 2 inputs, x1 and x2. Okay, and I want to predict something. I want to just make a prediction. मुझे कुछ तो prediction चाहिए. So now I have on the first hidden layer, I have 3 neurons. So what we have to do, guys, हम लोग को इन तीनों को input देना पड़ेगा first input से. मतलब x1 से मुझे इन तीनों को input देना पड़ेगा. In a similar way, मैं यहाँ पे सिर्फ color change कर रहा हूँ. Second वाला जो बंदा है उसके लिए हम color change करके like something like green ले लेते हैं. So from the second guy, मुझे इन तीनों न्यूरॉन को वैल्यू देनी पड़ेगी. It must be the straight line, but just consider that's a straight line. Okay.
So here we have three inputs from here we have three inputs from both the input x1 and x2. Okay, दोनों में से हम लोग को तीनों न्यूरॉन को इनपुट देना पड़ेगा. Now the next thing is that's my first hidden layer. A first hidden layer के बाद जो भी हम लोग को आउटकम मिल रहा है उसका आउटपुट मुझे second hidden layer को पास करना है. Second hidden layer having two neurons. So what we have to do? अब यहाँ से इन दोनों को इनपुट जाएगा like this. Okay, in a similar way second neuron का जो आउटपुट आ रहा है मेरे पास वहां से भी मुझे दोनों को इनपुट देना पड़ेगा something like this. And let I just change the color one more time. So here we have to just go with this one also. Okay, and finally in दोनों का जो आउटपुट आ रहा है that output we have to forward to the last guy. Okay, so it will be like this. So that's that. So guys, consider we have an input layer and we have two hidden layers. And first hidden layer there are three neurons, and the second hidden layer there are two neurons, and finally we have an outcome layer. Okay, that's also a neuron, but it will actually predict something. It will actually predict something. So now the question is, what will be the theta? Theta in the sense you have to just consider that's the weight. Okay, so how many weights you have to tune? कितने weight आपको यहाँ पे pass on करने पड़ेंगे? That's the question. So now the thing is, अब अपने पास यहाँ पे कितने neurons है? यहाँ पे कितने न्यूरॉन्स है फर्स्ट लेयर में? वी हैव थ्री न्यूरॉन्स. तो दोनों इनपुट को तीनों बंदों को डेटा देना पड़ेगा. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज देयर अ बायस अवेलेबल और नॉट? बायस इज प्रेजेंट और नॉट? बट अब जिस बायस की वैल्यू कंसीडर करनी है, यूनिवर्सल अप्रोच ले रहे हैं तो उससे पहले एक बार कंसीडर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ टोटल कितने हैं. 1 2 3 3 6 और इन दोनों का आउटपुट 2 + 2 + 2 6 6 + 6 12 12 + 2 दैट्स 14. अब बायस कंसीडर करते हैं. सो 3 2 5 and 6 बायस आर देयर. Okay, so totally how many guys are there? Totally 20 weights we have to tune. Guys, is it clear? 20 कैसा है वो समझ में आया? मैं कैसे कर रहा हूँ? देखो, इस बंदे का कितना आउटपुट आएगा, इसमें से मुझे कितने मतलब कितने मुझे लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे? 3. Okay, from this one there are 3 + 3 6. Okay, now यहाँ से कितने आउटपुट जाएंगे? 2 2 and 2. That means total is 6. 6 and the previous layer weights are nothing but a 6 6 + 6 12 12 और 2 इसके 12 + 2 14. नाउ हर एक के अंदर एक एक बायस ऐड करना है. 14 15 16 17 18 19 20. So total 20 weights we have to consider. Okay, total 20 weights we have to tune. At the first point we have to tune 20 points. Okay, so that's nothing but in the value of theta. That's nothing but in the value of theta. मैंने ये सब कुछ क्यों बताया? Because overall मुझे c of theta को डिक्रीज करना था. In the sense जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, like consider here we have theta values. Just consider this is nothing but a w1 and w2. Okay, theta की जगह हम w1 and w2 बोलते हैं. That means what? That's our weight. So मान लो सिर्फ like previous example में हम लोगों ने जो example लिया यहाँ पे previous slide के अंदर, here we have 20 weights. मेरे पास 20 weights थे. Now by default हम लोग first time पे perceptron algorithm पे weights को tune करते, assume करते. This is my weight vector. एंड वन लाइक जैसे जैसे मेरा इटरेशन लूप आगे बढ़ता है, जैसे जैसे लूप आगे बढ़ता है हम लोग उस वेट की वैल्यू चेंज करते हैं बिकॉज वी वांट टू मैनेज द एरर, वी वांट टू जस्ट डिक्रीज द एरर, वी वांट एक्चुअली मोर एक्यूरेट एल्गोरिथम, वी वांट अ मोर एक्यूरेट मॉडल एक्चुअली. तो हम लोग वेट की वैल्यू के साथ डील करते हैं. ओके, सो नाउ गाइस लाइक कंक्लूजन ऑफ दिस स्लाइड इज लाइक व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन. हम लोग एक बार कंक्लूजन पे चलते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन? That is the average cost. Okay, overall average cost it is. What about the loss function? What about the loss function? So either of the loss function you can just choose, guys. Okay, either of the loss function you can just choose. That's the thing. What is the cost function? What is the loss function? Now the next thing is, what about the error surface? So before the error surface, once again we come to our example. In this example, we have two inputs x1 and x2. Let I say the value of x1 is -1. Okay, and the value of x2 is half. Value of x2 is half, and this model just predict, oh, that's actually 0. Means it's a red point. Otherwise, it just say, oh, that's a green point. So it just say 1. So that's my outcome. मैं binary classifier program use कर रहा था. So मुझे कुछ output भी मिल गया. That's that. But now still the thing is, मुझे w कितने रखने पड़े? 20. मुझे w कितने रखने पड़े? 20. Because there are two hidden layers with 3 neurons. Second hidden layers having 2 neurons, and the finally output layer having a single hidden layer. Sorry, a single neuron actually. तो मुझे 20 weights पहले से assume करने पड़े. By mistake मैं ऐसे weight ले चुका जिसमें बहुत सारा error था.
मैं ऐसा कुछ वेट चूज कर पाया, कैसा बाय मिस्टेक ऐसा कुछ मैंने, बिकॉज फर्स्ट वेक्टर जो होगा, फर्स्ट वेट वेक्टर, वो तो मैं अज्यूम ही करना है, कुछ भी अज्यूम कर रहे थे, देन आफ्टर वो चेंज हो रहा था। तो नाउ द थिंग इज मैंने कुछ भी रैंडमली चूज कर लिया एंड इट मेक्स इन लाइक इट्स नॉट एन गुड वेट वेक्टर, उसने काफी सारे एरर जनरेट करके दिए। सो गाइस दैट वी कैन मैनेज इन सरफेस। अगर मैं वेट को प्लॉट करूं, like this is my first weight W1, this is my second weight W2, and this j को इग्नोर करके आप ऐसा बोले that is nothing but a cost function. This is actually j of theta 0 of theta 1. So just consider this is nothing but a cost function with actually W1 and W2. Okay, with actually W1 and W2. What is the cost function? Cost function मतलब ये आप जो W यूज कर रहे हो, ये आपने जो W यूज किया, what is the W? That's actually theta. Okay, उससे जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आपको मिली है, उससे जो प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो भी आपने वेट ट्यून किए, जो भी आपने वेट वेक्टर स्टार्टिंग में एज्यूम किया, तो उसकी मदद से जो आपने आउटपुट ट्यून किया, आउटपुट आपने प्रेडिक्ट किया, ओके, जो भी आपको आउटपुट मिला, एंड जो एक्चुअल आउटपुट था, व्हाट इज द जेड इज नथिंग बट एक्स, वाई, व्हाट इज दैट एक्स, दैट्स द फ्यूचर वैल्यू, वाई इज नथिंग बट एन एक्चुअल वैल्यू, जो आपको आउटपुट मिला। उनका लॉस क्या है भाई? उन दोनों का डिफरेंस इन स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर लॉस फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, और एवरेज आपको लॉस क्या मिल रहा है? हर एक रिकॉर्ड के लिए आपको लॉस कैलकुलेट करना है एंड जस्ट काउंट दैट वेट, ओके, सॉरी, जस्ट काउंट, जस्ट एक्चुअली उनका समेशन करें एंड समेशन करके उनका एवरेज जस्ट कंप्यूट करें, दैट्स योर कॉस्ट फंक्शन। ओके, सो मुझे ऐसा करना था कि मैंने W1 एंड W2 की कोई रैंडम वैल्यू चूज कर ली। लेट आई जस्ट चूज एक्चुअली लाइक समथिंग लाइक हियर 0.3, दैट्स माय W1, and like 0.6, that's my W2. So this is nothing but in weight value. Okay, जैसे इसको मैं आगे बढ़ा दूं थोड़ा पॉइंट को, so that's nothing but a cost function. So something like here, okay, something like here, so this is the cost. Okay, so that's the, like, it's the top value of the hill, it's a hill value. Okay, that means cost is quite high, मेरा error rate काफी काफी ज्यादा error rate है। cost in the sense it's nothing but an loss function जो हमने यूज किया था। what is the loss function? predicted value and actual value, उनके ऊपर का difference, that's your loss function। उनका average, तो average मुझे काफी high मिल रहा है, that means I have not like actual, otherwise I could not actually generate a good model. So that's the problem. Now how to decrease this like error rate, or how to just decrease this loss function or cost function, not the loss function, cost function। cost function का value कैसे decrease करें? consider कि आप कोई इस position पे हो, आपको इस position पे हो, so that's the top value, otherwise hill value of the error surface। ओके, एरर सरफेस मतलब क्या गाइस? मैंने डिफरेंट डिफरेंट W1 और W2 की वैल्यू ली, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली, अदरवाइज मैंने W1 W2 को डिफरेंटली ट्यून किया, जैसे कि 0.0, 0.1, 0.2, हमने ग्रिड अप्रोच पर एक बार लर्न किया था। सो ग्रिड वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट की W1 W2 की, एंड मुझे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट वैल्यूज मिली और मैंने उसको विजुअलाइज किया। सो नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? जैसे यहाँ पे मुझे कोई कॉस्ट मिला, अदरवाइज यहाँ पे मेरे पास कोई कॉस्ट वैल्यू है। माय रिक्वायरमेंट इज, मुझे सबसे कम कॉस्ट वैल्यू चाहिए मेरे मॉडल में, मतलब एक्यूरेसी सबसे ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स कैसे भी करके इसको यहाँ पे मुझे इस तरफ लाना है, दैट्स नथिंग बट अ वैल्यू। बट इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मान लो ये मेरा वैल्यू था, so something like W1 will be over here and WT2 will be something like over here। इस तरीके से W1 and W2 था, this one is W1, this one is W2, तो मुझे ऐसा कुछ एरर रेट मिलता था। अगर मुझे एरर रेट ये चाहिए, then I have to just change the value of W1, so it will be something like over here। I have to change the value of W2, it will be something like over here। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा एरर रेट मिलेगा। सो इन शॉर्ट, मुझे स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली अगर कोस्ट फंक्शन की वैल्यू चेंज करनी है, देन आई हैव टू जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ W1 एंड W2। मुझे W1 एंड W2 की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सो गाइस, ऐसा तो आप बोलोगे सर ये तो हम लोग पहले कर चुके थे परसेप्ट्रॉन में, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम में ये हम लोग कर चुके थे। व्हाट इज द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम? के सर पहले आउटर लूप था, पहले मेरे पास एक आउटर लूप था, लूप 1, इनसाइड दैट अनदर लूप इज देयर, दैट इज लूप 2। ओके, लूप 1 में हम क्या करते थे? आइदर m टाइम्स, अदरवाइज जब तक एरर रेट मेरा मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से डाउन नहीं जाता तब तक हम कंटिन्यू लूप चलाते थे। लेट अस से m टाइम्स, इन द सेंस 10 टाइम्स। एंड व्हाट अबाउट लूप 2? तो लेफ्ट लूप 2 डिपेंड करता है कि आपके पास कितने इंस्टेंस है, सॉरी कितने रिकॉर्ड्स है। ओके, xi नहीं, बट कितने रिकॉर्ड्स है, जस्ट इग्नोर दिस। ओके, कितने रिकॉर्ड्स है, तो जितने रिकॉर्ड्स थे उतने टाइम हम लोग इनर लूप एग्जीक्यूट करते थे। पहला एक यहाँ पे हम लोग W कंसीडर कर लेंगे। ओके, कोई एक W कंसीडर कर लेंगे, नॉट हियर, आउटसाइड द आउटर लूप। यहाँ हमने स्टार्टिंग में कोई एक वेक्टर कंसीडर किया। नाउ व्हाट्स आवर कांसेप्ट?
जब inner loop के अंदर आप जाओगे, at that time we will just use that like assume W, हम लोग उसको assume किया हुआ W को use करेंगे, and after that what is our next task, हम लोग अपने actual like कोई एक record के लिए जितने भी attributes हैं उनको use करेंगे W के साथ, like W in the sense वो vector को use करेंगे, and हम लोग हमारे integration function को use करेंगे, and according to that integration function we will predict something by using the activation function, either sigmoid or step function and something like that. And अब हम लोग check करेंगे, oh actual function, sorry actual value and predicted value are same or different, and as per that हम W को tune करते थे, W को actually change करते थे. So what is the formula for W? Wn plus 1 is equals to Wn. Wn plus 1 is actually Wn plus then the loss function is there. Loss function in the sense loss function का output आपको क्या मिल रहा था, 1 या 0 या something like that. According to that हम लोग Wn plus 1 select करते हैं. So that's the concept. इस तरीके से W change करते थे. यहाँ भी क्या बोला हुआ है, sir just change the W. पर ये हमने perceptron algorithm में कर लिया, तो वापस क्यों learn कर रहे हैं? Because right now हम universal चीज देख रहे हैं. Okay, सिर्फ not only perceptron algorithm, जैसे मेरे पास ANN का दूसरा algorithm है, that is back propagation algorithm. So मुझे उसके लिए भी कुछ W, कुछ like W in the sense right now you can just consider theta or W. That's the weight vector. मुझे weight vector के साथ work करना है, मुझे cost function के साथ work करना है, integration function के साथ work करना है, activation function के साथ work करना है. Even I want to work with actually like with like error surface. So there are lots of different things we want to manage, but मुझे universally study करना. So now हम लोग इसीलिए error surface पे आए, and these are the terminologies जो आपको NN में generally दिखेंगे, cost function, loss function and error surface. तो error surface in the sense what? अगर आपने कोई W की value tune की, कोई W की value choose की, you will get some error. मुझे error rate कम करना है, that means what? We have to just change the W value. Okay, दोनों W के value या जितने भी, जैसे last example में हमारे पास 20 W थे, you have to just change the value. So that's that. So that is error surface. What we have to do in error surface, we have to just change the value of W to just reach at a particular value with the minimum loss. So that's that. That is something about the cost function, loss functions, and error surface. I hope that's clear. What is cost function? What is loss function? Loss function we can just choose. What is the cost function? Cost function is nothing but an average of all the loss values. What about the error surface? Error surface in the sense at the particular point of W1 and W2 with the particular value of W1 and W2, whatever the error is there, that is actually known as error surface. Okay, if you just plot all these errors, that is actually error surface. So is it fine?